अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं समा, मैं हूं फवाज ज़ैदी और मैं हूं किरण आफ्ताब। बुलेटिन में खुशामदीद। सबसे पहले जिक्र होगा बड़ी अदालत के बड़े हुक्मनामे का, जो अब तहरीरी तौर पर भी सामने आ गया है। सुप्रीम कोर्ट ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनों का डी चौक तक पहुंचना अदालत को कराई गई यकीन दहानी की खिलाफ वर्जी करार दे दिया है। हक़ाइक़ के तयन के लिए ISI और IB से 7 सवालों के जवाब भी तलब कर लिए गए हैं। अदालती हुक्म की खिलाफ वर्जी साबित होने पर तौहीन अदालत की कार्रवाई का इंदिया भी दे दिया है। अदालत उज़्मा ने इमरान खान के खिलाफ कार्रवाई की इजाज़त देने की अटॉर्नी जनरल की दरख्वास्त खारिज कर दी है। ज़ुल्क़रनैन इक़बाल की रिपोर्ट। 25 मई का लॉन्ग मार्च PTI को महंगा पड़ गया। तहरीक इंसाफ के कारकुनों का डी चौक पहुंचना अदालती हुक्म और अदालत को कराई गई यकीन दहानी की खिलाफ वर्जी करार। सुप्रीम कोर्ट ने अदालती हुक्म की खिलाफ वर्जी साबित होने पर तौहीन अदालत की कार्रवाई का इंदिया दे दिया। अदालती हुक्म की खिलाफ वर्जी PTI क़यादत के हुक्म पर की गई या नहीं, हक़ाइक़ जानने के लिए अदालत ने DG ISI, DG IB, सेक्रेटरी दाखिला, चीफ कमिश्नर और IG इस्लामाबाद से 1 हफ्ते में अहम सवालात के जवाब मांग लिए। अदालत ने पूछा कि इमरान खान ने डी चौक जाने की कॉल कब दी, कारकुन कब, कैसे और कौन सी रुकावटें तोड़कर डी चौक पहुंचे, हुकूमत ने अगर कोई रुकावट हटाई थी तो कौन सी, क्या हुकूमत ने मुजाहिरीन को तशद्दुद पर उकसाया, क्या मुजाहिरीन रेड जोन में दाखिल हुए, अगर हुए तो कितने, और क्या मुजाहिरीन की कोई क़यादत भी कर रहा था या नहीं। तमाम रिपोर्ट्स के बाद फैसला होगा कि तौहीन अदालत की कार्रवाई होगी या नहीं, और अगर होगी तो किसके खिलाफ। फैसले में कहा गया है कि अदालत ने नेक नीति से अवामी मुफाद में फ्रीकैन के दरमियान तवाज़ुन पैदा करने की कोशिश की, लेकिन उसकी लाज नहीं रखी गई। अदालत ने अटॉर्नी जनरल की इमरान खान के खिलाफ कार्रवाई की इजाज़त देने की दरख्वास्त खारिज करते हुए जायजे के लिए ठोस मवाद मांग लिया। करार दिया कि पुरअमन एहतजाज का आईनी हक रियासत की इजाज़त से मशरूत है, लेकिन रियासत मखसूस हालात के अलावा पुरअमन एहतजाज की इजाज़त यकीनी बनाए। आम इंतखाबात तक हुकूमत, PTI और दीगर जमातों को एहतजाज का ज़ाब्ता अखलाक तय करने की हिदायत भी की गई है। ज़ुल्क़रनैन इक़बाल, समा, इस्लामाबाद। इसमें इख्तिलाफी नोट भी है। डी चौक जाने के ऐलान से बादियो नजर में अदालती हुक्म की खिलाफ वर्जी की गई। जस्टिस याह्या आफरीदी का इख्तिलाफी नोट, कहा इदारों से रिपोर्ट मंगवाने के बजाय इमरान खान के खिलाफ कार्रवाई की जाए। जस्टिस याह्या आफरीदी ने इख्तिलाफी नोट में मजीद क्या कहा, इसी पर अपडेट करेंगे। समा के नुमाइंदे ज़ुल्क़रनैन इक़बाल से ही बात करेंगे। जी ज़ुल्क़रनैन। लेकिन जस्टिस याह्या आफरीदी की जानिब से जो इख्तिलाफी नोट लिखा है उसमें उन्होंने हवाला दिए इमरान खान के कंटेनर पे से दिए गए उस वीडियो बयान का, जिसमें इमरान खान कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ गया है, इजाज़त मिल गई है, अब कोई रुकावट नहीं होगी, तमाम अफसरात डी चौक पहुँचे। जस्टिस याह्या आफरीदी का कहना है कि इस बयान के बाद वो फैसले के उस हिस्से से मुतफिक नहीं है कि अदालत के पास इमरान खान के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए कोई मवाद नहीं है, क्योंकि उनका कहना था ये बयान काफ़ी है अदालत की जो अंडरटेकिंग दी गई थी उसकी खिलाफ वर्जी पर। उन्होंने अपने नोट में ये भी लिखा है कि इस बयान के बाद इमरान खान से इदारों से बजाय रिपोर्ट मांगने के इमरान खान को तौहीन अदालत में शो कॉज का नोटिस जारी करना चाहिए और ये उनसे पूछना चाहिए कि क्यों ना उनके खिलाफ तौहीन अदालत की बाज़ाब्ता कार्रवाई का आगाज़ किया जाए। उनका यह भी कहना था कि अदालती फैसले के बाद डी चौक आने की कॉल देना इमरान खान की जानिब से अदालती फैसले की खिलाफ वर्जी की गई है। साथ ही साथ उसमें यह भी कहा गया कि अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान ने जो इमरान खान के खिलाफ कार्रवाई की इजाज़त मांगी थी, इस हवाले से अमन व अमान बरकरार रखना और कार्रवाई करना खुद हुकूमत का इख्तियार है, तमाम जो अदालत के ये इख्तियार मांगना और उनसे इजाज़त लेना आइन की खिलाफ वर्जी है। जी बहुत शुक्रिया आपका, आप हमें आगाह कर रहे थे। और इस वक्त तुर्क सदर रजब तैयब अर्दवान और वज़ीर आज़म मियाँ शहबाज शरीफ मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। Tourism, education, logistics, civil aviation, communication, and ICT-like services industries are the areas we're working to further improve our relations. Mr. Sharif also had talks with the members of our business world, and these talks, these negotiations will contribute, I believe, to our mutual investments. As Turkey, the driving engine of our economic cooperation are our business people and investors, and we encourage our business people and investors to invest more in Pakistan. For the structuring of FETO in Pakistan, the measures taken deserve special thanks in our eyes. And I would like to thank to the authorities of Pakistan for their great support. The fallen soldiers in the terror attacks
that took place in Pakistan. I remember them with gratitude and pray for the mercy of God on their souls, and I wish a quick recovery on all those wounded. We support Pakistan in their efforts against all types of terror. The fight Pakistan has against terrorism, I definitely believe, will triumph. To ensure stable, lasting stability in Afghanistan and to prevent irregular migration, Pakistan has a critical position. The impacts of the humanitarian crisis in Afghanistan was another issue about which we have been jointly exerting efforts. To Afghanistan, we have supplied more than 4 tons of humanitarian goods and food, and we sent many trains to the region, and we continue cooperating with Afghanistan in this regard. Another issue about the region is the Kashmir issue, and in line with the legitimate expectations of our brothers and sisters from Kashmir, we support the solution of the problem in line with the UN resolutions. As I conclude my remarks, I hope that our talks will be auspicious, and I would like to thank to my dear brother, Mr. Sharif, and his delegation for their visit. And in the person of Mr. Prime Minister, I would like to send my deepest greetings to my Pakistani brothers and sisters from here. Thank you. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Your Excellency President Recep Tayyip Erdogan, Honorable Ministers, distinguished members of the media, ladies and gentlemen, Assalamu alaikum. I would like to thank my dear brother, President Tayyip Erdogan of the Republic of Turkey, for the very warm welcome and gracious hospitality extended to me and my delegation. Coming back to Turkey is like coming to our own second home. I bring with me the most cordial greetings of the people of Pakistan for our brothers and sisters in Turkey. The relationship between Pakistan and Turkey is embedded in common cultural, religious, and spiritual heritage, transcending boundaries of time, geography, and politics. We look at these relations as a sacred trust that has been passed on to us by our forefathers, and which we are committed to hand over to our succeeding generations. This year, our two countries are celebrating in a befitting manner the 75th anniversary of the establishment of our diplomatic relations. Under my dear brother, President Erdogan's dynamic and visionary leadership, our bilateral relations have scaled to newer heights. I deeply appreciate the sincere, heart-to-heart and productive discussion that we have just had this afternoon. As you are aware, our countries are also engaged in comprehensive discussions at high-level strategic cooperation council meetings, which have become instrumental in fully exploring and building upon our shared interest. I'm very happy to announce that my brother President Tayyip Erdogan has indicated to hold next session of high-level meeting in Islamabad in the month of September. I'm very grateful, Mr. President, to give us this opportunity to play host to you and to your team members, and we look forward to these very productive meetings, and the people of Pakistan will accord a very warm
welcome to you, inshallah. Consequently, we are looking forward to this. Well, we have just dealt with that. A strong business delegation is also visiting Pakistan next June, as has been very kindly indicated by President Tayyip Erdogan, and our team will make proper preparations to hold meetings over there so that we're able to make very solid and productive results. Brother President, there are a number of sectors such as e-commerce, tourism, education, infrastructure development, where Turkey has made exponential progress. And as we discussed this evening, that in the field of hydropower generation and renewable energy, we would be very happy to get support from Turkey in terms of investments. Our Turkish brothers will make investments, make profits, and we will get cheap energy, which will be a very win-win situation. A few days ago, on 20th of May, along with our brother Turkish Defense Minister Hulusi Akar, I participated in the launching ceremony of PNS Badr Belgium Kuwait, another shining example of our wonderful collaboration between our defense industries. We look forward to have further cooperation in attack helicopters and other areas of mutual cooperation. Pakistan and Turkey are natural partners. Many of our challenges are the same as our opportunities. Our two nations have stood by each other in times of need and on issues of core interest. In particular, the people of Pakistan deeply appreciate Your Excellency's steadfast support on the Jammu and Kashmir dispute. Turkey's unflinching support provides great strength to the valiant Kashmiri people who have been subjected to the worst kinds of human rights violation for over 7 decades. I apprised His Excellency, Brother President Tayyip Erdogan, of the threat that Indian action posed to regional peace and stability, including its attempts to change the demographic composition of the occupied territory of Jammu and Kashmir. Pakistan will not abandon its quest for peace, but we are convinced that durable peace in South Asia can only be achieved if the long-standing Jammu and Kashmir dispute is resolved in accordance with the UN Security Council resolutions and the wishes of the Kashmiri people. For its part, Pakistan has always strongly supported the cause of our Turkish Cypriot brethren, and we will continue to support their legitimate rights and aspirations. Pakistan also stands with Turkey in its fight against terrorism, including the threats posed by FETÖ and PKK. Enemies of Turkey are enemies of Pakistan. Distinguished members of the press, our partnership is a force for perpetual good. We have worked together for decades to promote the shared objectives of a peaceful and stable Afghanistan. Our two countries host the largest refugee population in the world. We are doing so almost exclusively from our own scarce resources. Before I end, Mr. President, let me say something that is very
close to our hearts. The emotional bond between our two countries goes beyond conventional interstate relations and diplomatic niceties. It is a bond that is rooted in history, as we have earlier said a few minutes ago, in culture and in the fabric of our two societies. It is a bond that resides deep in our hearts and sits there and will sit there forever. This bond, this unbreakable bond, is unique in that it connects us at all levels and in all layers. Our states, our governments, our institutions, our armed forces, and above all, our people. There are very few examples in today's world of two nations being so closely intertwined and interlinked, and of course interwoven at so many levels for so many genuine and heartwarming reasons. Today, when I stand here or sit here in front of you with my dear brother, President Tayyip Erdogan, I am overwhelmed with emotion at the love that I've received here, my colleagues, and at the love that every Turkish citizen receives from every Pakistani, and vice versa. And for this, I am truly grateful to Almighty Allah subhanahu wa ta'ala. May He shower His blessings upon all of us. Ameen. Brother President, I thank you once again for inviting us and for the very warm welcome accorded to us at every level of our meeting and receptions since yesterday afternoon. We look forward to welcoming you, Your Excellency, in Pakistan in the month of September, inshallah, and it will give us another opportunity to renew our brotherhood, our fraternal relations, and further strengthen them. We hope you will have time to visit Islamabad, Lahore, Karachi, Peshawar, and Quetta. Pakistan, Turkish friendship, Zindabad. Pak-Turkey Zindabad. Thank you very much. पाकिस्तान खित्ते में अमन के लिए काम करता रहेगा। दोनों ममालिक मुस्तहकम और पुरअमन अफ़गानिस्तान के हामी हैं। वज़ीर आज़म मियाँ शहबाज शरीफ का ये कहना है। पाकिस्तान और तुर्की को कई यकसा चैलेंजेस का सामना है। मसला कश्मीर पर तुर्की के वाज़े मौक़िफ़ को सराहते हैं। इन शोबों में तुर्की के तजुर्बात से फ़ायदा उठाएंगे। ई कॉमर्स, टूरिज़म, तालीम के शोबों में तुर्की ने ज़बरदस्त तरक्की की है और वज़ीर आज़म मियाँ शहबाज शरीफ ने यही कहा है कि इन शोबों में तुर्की के तजुर्बात से इस्तिफ़ादा किया जाएगा। दोनों मुल्कों की आला क़यादत अगली मुलाकात सितंबर में इस्लामाबाद में करेगी और इस वक्त मुसाफा किया जा रहा है। तुर्क सदर रजब तैयब अर्दवान की जानिब से वज़ीर आज़म मियाँ शहबाज शरीफ का आज पुरतपाक इस्तकबाल भी किया गया। ऐवान सदर आए थे आज मियाँ शहबाज शरीफ, जहाँ पर उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर भी पेश किया गया। तो कोशिश यही है मियाँ शहबाज शरीफ की किरण इस दौरे के मौके के ऊपर कि किसी तरीके से तिजारत को बहुत ज़्यादा बढ़ाया जाए, चूँकि 1.1 अरब डॉलर की तिजारत है अभी पाकिस्तान और तुर्की के दरमियान। इसको बढ़ाकर कम से कम 5 अरब डॉलर तक किया जाए, इसके लिए कोशिशें की जाए। वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने यही नया टारगेट सेट किया है और इसके अलावा ये भी है कि इन रिश्तों को मज़ीद मजबूत बनाना है। पाक तुर्क दोस्ती जिंदाबाद। 75 साल पाकिस्तान और तुर्की के सिफारती ताल्लुकात के मुकम्मल हुए हैं। इस मौके की मुनासिबत से भी बहुत सारे प्रोग्राम्स अरेंज किए गए। वज़ीर आज़म पाकिस्तान कुछ तिजारती मामलात को भी आगे बढ़ाना चाहते हैं, सनती तरक्की के लिए भी काम करना चाहते हैं और इससे पहले भी वो तामीरात के शोबे में तुर्की की जो बेमिसाल कामयाबियां हैं, अजीम शान मंसूबे हैं, उससे भी फ़ायदा उठाना चाहते हैं। तारीफ़ भी कर चुके, ऐसा कह भी चुके। तहरीक इंसाफ ने लॉन्ग मार्च पार्ट 2 में मुमकिना रुकावटों और गिरफ्तारियों से बचने के लिए सुप्रीम कोर्ट से रुजू कर लिया है। हुकूमत को कंटेनर्स लगाने से रोकने और मार्च शुरा के खिलाफ ताकत का इस्तेमाल रुकवाने की इस्तदा कर दी है। असद उमर कहते हैं उम्मीद है अदालत आईनी और कानूनी हक का तहफ़्फ़ुज़ करेगी।
फसादी मार्च को इस्लामाबाद में किसी सूरत दाखिल नहीं होने दिया जाएगा। राना सनाउल्लाह ने साफ साफ बता दिया है, बोले मुल्क को जत्थों के रहमो करम पर नहीं छोड़ा जा सकता। इस्लामाबाद से अब्बास शब्बीर रिपोर्ट कर रहे हैं। इमरान खान की तख्ते पेशावर से इस्लामाबाद पर फिर खूनी यलगार की धमकियां। वफाकी हुकूमत ने दूसरा हमला रोकने के लिए नई हिकमत अमली बना ली। वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने वफाकी पुलिस और FC की इस्तेदाद कार बढ़ाने के लिए बड़ी बैठक बुलाकर बड़े फैसले कर डाले। FC को वफाकी पुलिस की मुआवनत के लिए रद्दुल फसाद फोर्स का दर्जा देने का फैसला, खुसूसी तरबियत दी जाएगी। दोनों फोर्सेस की माली, तकनीकी और कानूनी इमदाद बढ़ाने की ठान ली गई। इस्लामाबाद पुलिस के शोधा पैकेज की मद में 1 अरब रुपए के बकाया जात फौरी अदा किए जाएंगे। वफाकी दारुल हुकूमत की फुल प्रूफ सिक्योरिटी के लिए सेफ सिटी प्रोजेक्ट को जदीद तरीन बनाने, कैमरों की कवरेज को 100% करने और जुड़वा शहरों की पुलिस और इंतजामिया के दरमियान कोऑर्डिनेशन मैकेनिज्म कायम किया जाएगा। ये भी तय पाया कि इस्लामाबाद पुलिस और FC की तनख्वाहें, अलाउंसेज और शोधा पैकेज को आइंदा माली साल से पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के मुसावी कर दिया जाएगा। इजलास में वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने दबंग ऐलानात भी कर दिए। कहा, मुल्क को फसादी जत्थों और शर पसंद अनासर के रहमो करम पर नहीं छोड़ा जा सकता। इस्लामाबाद में जबरदस्ती दाखिल होने की कोशिश करने वालों को सख्ती से कुचल दिया जाएगा। पाकिस्तान ने बरतानवी हुकाम से 25 मई को लंदन हाई कमीशन में ज़बरदस्ती घुसने, अमले से बदतमीजी करने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई का मुतालबा कर दिया है। इसी बारे में मजीद बात होगी। ब्यूरो चीफ लाहौर नईम हनीफ हमारे साथ हैं। नईम हनीफ, बहुत सारी वीडियोज हैं सारे के सारे मामले की, क्या उनको भी अटैच किया जा रहा है इसमें? जी बिल्कुल किरण, पाकिस्तान की तरह बरतानिया में भी जो है वो तहरीके इंसाफ के रहनुमाओं के गिर्द घेरा तंग किया जा रहा है। और इतला ये मिली है कि पाकिस्तान हाई कमीशन ने तहरीके इंसाफ बरतानिया के रहनुमाओं के खिलाफ कार्रवाई के लिए बरतानवी हुकूमत को दरख्वास्त दे दी है। बरतानवी हुकूमत को दरख्वास्त में 25 मई को तहरीके इंसाफ के रहनुमाओं की तरफ से हाई कमीशन की इमारत में जबरदस्ती घुसने, सफारती अमले से बदतमीजी और तशद्दुद के वाकया में मुलव्वस अफराद के खिलाफ कानूनी कार्रवाई का मुतालबा किया गया है। और दरख्वास्त जो है वो हाई कमीशन की तरफ से बरतानवी दफ्तर खारजा से जमा करवाई गई है, जबकि दरख्वास्त में वाकया की वीडियोज भी जमा करवाई गई है। नजर आने वाले तहरीके इंसाफ के रहनुमाओं के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा किया गया है, जबकि 25 मई को तहरीके इंसाफ के रहनुमा ने मुबैना तौर पर इमरान खान के फोकल पर्सन साहबजादा जहांगीर की क़ियादत में हाई कमीशन दफ्तर में जबरदस्ती दाखिल होकर हमलावर हुए। वीडियो के मुताबिक जहांगीर ने इमरान हाई कमीशन की इमारत में मौजूद थे उस वक्त, जबकि इसी मामले को उठाया गया है। बहुत शुक्रिया नईम हनीफ। कराची की जेल चौरंगी पर इमारत की बेसमेंट में कायम सुपर स्टोर में सुबह से लगी आग पर अब तक काबू नहीं पाया जा सका। एक शख्स झुलस कर जाँ बहक और 5 जख्मी हुए। शाहनवाज अली कादरी रिपोर्ट कर रहे हैं। वक्त था सुबह 11 बजे का और जगह थी कराची की जेल चौरंगी, जहां पर वाक़ कसीरुल मंजिला रिहायशी इमारत समिया ब्रिज व्यू के बेसमेंट ने अचानक हौलनाक धुआं उगलना शुरू कर दिया। इत्तला मिलते ही फायर टेंडर्स ने शोलों तक पहुंचने में ज्यादा देर तो नहीं लगाई, लेकिन बर वक्त पहुंचने के बावजूद धुएं को काबू करना चैलेंज बन गया। आग और धुएं ने बेसमेंट से ऊपर ग्राउंड फ्लोर पर कायम बड़े सुपर स्टोर को भी लपेट में ले लिया। इमारत के रिहायशियों को हंगामी सीढ़ियों से बाहर निकाला गया, जबकि बीमार और ज़ईफ अफराद के लिए रेस्क्यू टीमों को अंदर भेजा गया। किचन का सामान क्या है वहाँ पर? गारमेंट से क्रॉकरी है, मतलब सारा फूड का सामान है, नॉन फूड सब दोनों ही है। कस्टमर को बाहर निकाला, वो भी सेफ थे। आग में 1 घंटे तक फंसे रहने वाला नौजवान इमारत से बाहर आया तो उसकी मां की आंखें छलक पड़ी। फायर ब्रिगेड ने मेज़नाइन फ्लोर की दीवारें तोड़कर आग को कंट्रोल किया, लेकिन कुछ घंटे बाद शोले दोबारा भड़क उठे और रिसेप्शन तक पहुंच गए। बेसमेंट है और बेसमेंट में इजाजत नहीं होती किसी को कार को रखने की, क्योंकि अगर आग लगती है तो बेसमेंट कमजोर होता है और बेसमेंट ही इस बिल्डिंग का स्ट्रक्चर होता है साहब। दरबदर होने वाले रिहायशियों ने आग को ठंडा करने के लिए रब के हुजूर दुआएं भी मांगी। अल्लाह तुझसे मदद मांगते हैं, हम कमजोरों पर मदद फरमा। फायर ब्रिगेड हुक्काम के मुताबिक आग 3रे दर्जे की थी, जिसके बुझने के बाद भी कूलिंग का अमल कई घंटों तक जारी रहेगा। कैमरा टीम और साथी रिपोर्टर जमजम सईद और अहमद रहमान खान के साथ शाहनवाज अली कादरी, समा, कराची।
तो 10 घंटे गुजर गए हैं, अभी तक आग पर काबू नहीं पाया जा सका है। इस वक्त क्या सूरत हाल है ये जान लेते हैं। समा के नुमाइंदे अहमद रहमान खान हमारे साथ मौजूद हैं। अहमद, क्या किया जा रहा है आग बुझाने के लिए? ये भी इत्तलात हैं कि आइस बॉल्स भी इस्तेमाल की जा रही हैं। इस वक्त हम जेल चौरंगी के करीब वाक़ डिपार्टमेंटल स्टोर के बाहर मौजूद हैं, जहां पर आग बुझाने की कोशिशें जो है वो की जा रही हैं। इस वक्त जो है वो ये आइस बॉल जो है वो कहलाती है, इसका इस्तेमाल जो है वो अब फायर ब्रिगेड ने शुरू कर दिया है कि ताकि इस डिपार्टमेंटल स्टोर में लगी आग को जो है वो बुझाया जा सके। ना सिर्फ डिपार्टमेंटल स्टोर बल्कि इससे जो रिसेप्शन एरिया है, जो अपार्टमेंट का रिसेप्शन एरिया है जहाँ पर ये आग पहुँची है, उसको भी जो है वो बुझाया जा सके। इस वक्त जो है फायर फाइटर्स जो हैं वो गए ये आइस बॉल लेके आगे की जाने। कहा यह जा रहा है कि ये एक छोटा सा एक्सप्लोजन होता है और उसके बाद जो है वो आग उस एरिया की जो है वो बुझ जाती है। तो ये 20 के करीब ऐसी आइस बॉल्स हैं जिनका इस्तेमाल जो है वो इस वक्त करने के लिए फायर ब्रिगेड की टीम जो है वो यहाँ पर गई हैं। लाहौर में 200 रुपए के जूता चोरी का अनोखा मुकदमा दर्ज। तफसीलात बता रहे हैं समग्र नुमाइंदे फहद भट्टी। अनोखा मुकदमा दर्ज किया शफीकाबाद थाने में। एक जूता चोरी होने पर 200 रुपए मालियत का ये जूता है और जिस शहरी ने ये मुकदमा दर्ज करवाया है वो एक बुजुर्ग शहरी हैं, मोहम्मद शहरी हैं वो। उनके घर से किसी नामालूम चोर ने एक जूता चुराया, जिस पर मोहम्मद शहरी शफीकाबाद थाने गए और वहां पर जूता चोरी का मुकदमा दर्ज करवाया। जूती की कोई बात नहीं है, जूती की चोरी की बात है। मेरी जूती चोरी हुई है, कौन है मेरा? ये पुलिस किस काम की है? पुलिस का काम है तफ्तीश करना। जिन बुजुर्ग का मुतालबा है कि इनका जो जूता चोरी हुआ है वो जल्द अज जल्द बरामद करवाया जाए। हेडलाइंस होंगी ब्रेक के बाद। देखते रहिए समा।